create without any purpose, without any motive. Why? What is the need? कोई need नहीं होता है, right? So there is a need. So that's why it is very important. That's why we are going to discuss one by one importance of personal management, importance of HR management. So number one is staying competitive. What is in, if you are this is one of the importance of personal management. If you are going to uh, stay competitive, your employees, your working force, your managers, then you need a personal management department. Yes, if you want to stay competitive, your employees means, अगर आप अपने employees को competitive रखना चाहते हैं continuously, consistently, then you need a personal management department. So पहला importance है competition, competitive बनाए रखना employees को. And what are the different ways where you can stay competitive your employees? There are lots of ways. Like number one is training. Through training, this is one of the important function of personal management. I think you have studied about that. ये एक बहुत बड़ा important function है personal management का, जो हमने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा है. Training and development part, right? Functions of personal management, training and development, right? This is the thing. Means if you want to stay competitive your employees, you have to give proper training. You need to give proper training. You need to upgrade your employees with the latest information. You have to make aware them about the latest changes in the environment. आपको बताना होगा कि लेटेस्ट चेंजेस क्या हो रहे हैं आपके सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट, जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है. और इन द सेम सेक्टर व्हाट इज द अपग्रेडेड थिंग्स, क्या है अपग्रेडेड थिंग्स. सपोज यू आर इन business of technology, then you need to understand the latest technology. What are the changes? Like if you are working in artificial intelligence, so what is the new version of artificial intelligence? You have to make aware your employees about that. So this is very important to stay competitive your employees. The importance of personal management to stay competitive your employees with the help of training. You have to upgrade your employees. You have to give, proper, you have to conduct seminars at interval of time, a proper interval of time, like a specified time, like in a month, in a quarter, in a half yearly, or in a year. साल में एक या 6 महीने पे एक या 3 महीने पे एक महीने पे एक. You have to conduct seminars on the particular topic in which employees are doing as per the specialization. Is very good. And you need to conduct workshop as well. As you can invite the expert for the workshop. I think you all have attended the workshop in your first year, as well as if you have attended any sessions of workshop. Workshop is not like a class. It's I think where you do something, you learn from doing. That is the workshop. It is not that he just one person comes and start speaking and giving the lecture. It's not a workshop only. He will make you understand with the help of demonstration. He will give you the demo, like means learning with the help of doing. Learning by doing. Learning by doing is workshop. Means सीखना कब है? देख करना, करते हुए सीखो, वो होता है वर्कशॉप. Where the practical aspect of the things will be given to you. जो भी फील्ड में हो. If you are in the field of computer science, definitely you can go for the workshop of computer science. If you are in the field of HR, definitely you can attend the workshop of HR management. If you are in the field of marketing, definitely you can go for the workshop of marketing. So why important is stay competitive of your employees. The personal management का पहला importance है, you have to stay competitive your employees, because employees are your assets. आपके employees आपके asset हैं. अगर उनको competitive नहीं रखेंगे, they will be outdated. So जंग लग जाएगा उनमें. जब जंग लग जाएगा तो skill and development, skill and knowledge का development रुक जाएगा, right? Skill and knowledge क्या हो जाएगा? स्टैग्नेंट हो जाएगा. एंड स्टैग्नेंट होना अच्छी बात नहीं है. वी हैव टू इम्प्रूव इन आवर डेली लाइफ, in professional as well as in personal life. So that's why it is very important role of personal management here to stay competitive your employees. And we know very well employees are the asset. Employees बहुत बड़ा asset होता है ऑर्गेनाइजेशन का. और आप stay competitive कितने तरीके से रख सकते हैं.
तो ट्रेनिंग के थ्रू लेटेस्ट न्यूज़ और अपग्रेडेशन करके उनके इंफॉर्मेशंस को, उनके नॉलेज को सेमिनार्स कंडक्ट करा के, वर्कशॉप कंडक्ट करके आप कर सकते हैं डेवलपमेंट उनके स्किल्स एंड नॉलेज का, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस. नाउ यू आर हियर right now, you are in the 8th sim. If you go for the job and after 2 or 3 years you will see or you will find a change in yourself. अपने आप में एक चेंज देखेंगे, you will find a change because I think you have gone through the process and definitely you have to observe all the things. So you can say yes, I have learned something. जैसे आपने कुछ सीखा, because आप प्रैक्टिकल चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को अपग्रेड रखेंगे एज पर द स्पेशलाइजेशन. ऐसा नहीं है कि सब फील्ड का अपग्रेडेशन. हैव टू राइट इन अ डिफरेंट वे. रिटेंशन मीन्स यू आर गोइंग टू रिटेन योर एम्प्लॉयज. ऑब्जेक्टिव में क्या था? यू हैव टू रिटेन दोज एम्प्लॉयज हु आर परफॉर्मिंग वेल. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस. अगर आप एम्प्लॉयज को रोक रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंस बन रहा है ना, ये पर्सनल मैनेजमेंट का ये एक मतलब एक अच्छा पॉइंट है ना पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, कि पर्सनल मैनेजमेंट के हेल्प से हम लोग एम्प्लॉयज को रोक सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज को. सो रिटेंशन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. In retention, the personal management department retain those employees who are performing well and those employees who are valuable to the company. We have to retain such kind of employees. Do not leave that type of employees. You just offer the pay plan, a benefits package, facilities like child education, provident fund facilities, snacks during the working time, or number of things you can give. Tour package, fringe benefits you can offer. For what? For retention. हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव है to retain the employees. To retain the employees, this is the objective. ये बात किया था हमने. We have already discussed in objective. तो objective है तो how will you retain? So that's different. Yeah, we have a different choices. Like we can offer the pay plan, a good pay plan means good salary, good remuneration we can give. Benefits packages, like I told you that about fringe benefits. Tour packages, tour means they have कुछ place के लिए कुछ दे दिया, tickets, hotel booking, ये सब कराए. Facilities you can provide like child education, उनके बच्चों को education दिलाइए. School you can open for that. Provident fund, just give this scheme, provident fund facilities. Snacks during the working time, this will give a more attention towards the organization. जब employees को क्या होगा, अरे ये company is thinking about me, so why not I should think about the company, so I should not leave the company. ये thinking आ जाएगा उनके mind में. क्या आएगा कि कंपनी इतना फैसिलिटी दे रही है तो कंपनी क्यों छोड़े, हम यहीं रहते हैं. So in retention, it is one of the importance. To retain the employees is one of the important role of personal management here. अगर पर्सनल मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा रिटेन करने का, तो अच्छे एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के जाने लगेंगे. सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. नंबर 1 था स्टेइंग कॉम्पिटिटिव योर एम्प्लॉयज. अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव रखिए, अपडेटेड रखिए. बहुत सारे वे हैं, आप देख सकते हैं. दूसरा, कंपनीज के एम्प्लॉयज को रिटेन कीजिए. रिटेंशन में इंपॉर्टेंस है पर्सनल मैनेजमेंट का. अगर पर्सनल मैनेजमेंट ना हो तो रिटेंशन रेट बहुत कम हो जाएगा. एम्प्लॉयज आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, एंड दैट विल नॉट गुड साइन फॉर द कंपनी. दैट इज नॉट गुड. अनस्टेबल इज नॉट गुड साइन, आई डोंट थिंक सो. सो रिटेंशन रेट कम हो जाएगा अगर पर्सनल मैनेजमेंट ना हो तो. अगर ये है तभी इसका इंपॉर्टेंस में हम बोल रहे हैं रिटेंशन है एक इंपॉर्टेंस. मतलब एम्प्लॉयज को रिटेन करना है आपको, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन पर्सनल मैनेजमेंट मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज टीम वर्क. इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज वी नो, coordination, we have already discussed about that. Coordination is one of the important function, like coordinating the activities, coordinating between the employees, coordinating between the employees and company is one of the important role of person manager. So why it is important? Because teamwork, इंपॉर्टेंस जो है टीम वर्क में है पर्सनल मैनेजमेंट का. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक्चुअली पर्सनल मैनेजमेंट डेवलप्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन the employees, E1, E2, 3, these are the employees,
and the company, between employees and company, positive relationship, positive attitude will be developed with the help of personnel management. That's why it is the third importance. And every organization are divided into groups, divided into teams. So that's why all team are working together. So there is a bond. If you want to make a strong that bond, if you want to make a strong that bond, then you have to create a personal management department for that. वो आप क्या करेगा, एक मॉनिटरिंग करेगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल, because actions affect the productivity definitely. Suppose here a manager, Mr. A, and E1, E2 are the employees. So this is all about the managerial effectiveness, means the relationship between the manager and the employees or the subordinates. Employees जो junior होते हैं उनको subordinates भी बोलते हैं. Suppose there is a manager and these are the subordinates. So there is a relationship between the manager and the subordinates. But which type of relationship? Positive or negative? Negative means that is not good. Positive is, it means it is a good. Means where a manager can utilize this person for taking the work, for getting the work done. So this is very necessary role. This is very necessary to understand the role of each and every employee, and according to that a manager will assign duties or job. So you can see a manager is such kind of person. Managerial effectiveness I'm talking about, means he can handle in a pressurized situation or in a stress, because he or she has the managerial effectiveness. He knows very well how his or her actions affect productivity. Suppose ये दोनों employees हैं मैनेजर के पास, एंड मैनेजर से थोड़ा सा दे आर नॉट कि आई विल नॉट वर्क एंड समथिंग लाइक दैट करने लगे कि मैं नहीं करूंगा सर. तो यहाँ पे मैनेजर को क्या करना होगा, दे हैव टू, और मैनेजर हैज टू मेक देम अंडरस्टैंड पोलाइटली. पोलाइटली समझते हैं ना, मतलब प्यार से, तरीके से, एक नॉर्मल वे में, कीप एंड काम. ऐसा नहीं कि शाउटिंग वे में, स्टार्ट शाउटिंग in the starting. No, there is no need at all. In the starting you have to shouting on the employees. That is not a good sign. That is not a managerial effectiveness, because you have a short temper. It means you are not fit for that position, because here you have to, if you want to sit on that position, you have to be very intellectual, you have to polite, you have to talk politely. Even then they are arguing with you, because this is, they are the ground level staff and you are the managerial staff. It means there is a big difference between you, because you have to take the work from this. No, they don't know how, what are the etiquettes of organization, what are the culture. So आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा वहां पे. यू हैव टू हैंडल दोज एम्प्लॉयज, यू हैव टू हैंडल द मैन, यू हैव टू हैंडल द पीपल. तो ये स्किल भी आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे दैट इज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस. अगर यहाँ पे पोलाइटली समझाते हैं तो काम बन जाएगा. अफेक्ट देखिए, एक्शंस आपका जो है अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी पे, तो लोग काम की तरफ चले जाएंगे और फिर से हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर हम शाउटिंग करके, डांट के, या कहेंगे तुम पर ये हो जाएगा कि समथिंग लाइक दैट, तो ये क्या होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा. वो भी दूसरा एक्शन क्या, वो शाउटिंग, वो प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव जाएगा. तो यहाँ पे इसलिए कहा गया मैनेजरियल इफेक्टिवनेस का भी होना जरूरी है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पर्सनल मैनेजमेंट का. अगर पर्सनल मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली ग्रीवांसेस, जो ग्रीवांसेस सेल होते हैं, रिडरेशन, ग्रीवांसेस एंड रिडरेशन सेल होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपने प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं उस डिपार्टमेंट में. अगर वो डिपार्टमेंट ही ना हो ये, तो फिर कहाँ लेके जाएंगे ये. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजरियल इफेक्टिवनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पर्सनल मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई ये बोला गया चौथा इंपॉर्टेंस है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस होना. नंबर 5, लास्ट बट नॉट लिस्ट, human capital management. What is human capital management? The three terms here. This is one of the another importance of personal management. Means it helps in managing the human capital. Means personal management is managing human capital. Human means people, capital means the human capital means what I talked about, पूंजी जो बोलते हैं हम लोग, मनी के बारे में बात करते थे. अमाउंट, कैपिटल मीन्स पूंजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना. तो ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर मैंने बोला था ह्यूमन आर द एसेट्स या एम्प्लॉयज आर द एसेट्स. यस,
सो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपके पास आदमी कितना है, मैन पावर, मैन पावर मतलब स्ट्रेंथ, ह्यूमन में, पैसा में नहीं, ह्यूमन में ह्यूमन कैपिटल कितना है, राइट। वन सेकेंड, ओके। So what human capital management helps in strategic planning means with the help of human capital management means this is the importance of personal management, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट होगा तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट होगा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ये होगा कब, जब पर्सनल मैनेजमेंट होगा, अगर वो नहीं होगा पर्सनल मैनेजमेंट तो इसको मैनेज करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं आएगा, एचआर डिपार्टमेंट नहीं आता है, जो पर्सनल मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ। helps in strategic planning means if you are going to plan for a long term, so then you need to manage your human capital को manage करना है। It means utilization of your manpower means how many numbers of manpowers you have and you have to utilize them as per their skills and as per their priorities of the organization, which work is important and which work is less important, कौन ज्यादा important काम है, कौन कम important काम। according to that you have to utilize your manpower means human resource, it means employees indirectly, so like acts per priorities। अब नंबर 1 क्या है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो नंबर 1 प्रायोरिटी जो है पहले उसको प्रायोरिटी देना है और वहां पे एम्प्लॉयज का यूज करना है। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ले गया है मैंने, आई हैव टेकन अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैंने लिया है, काम लिया है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड है, मतलब ह्यूमंस को रिसोर्स का जरूरत है और हम उसमें ह्यूमन रिसोर्स पहले देंगे। एक मैंने लिया है, दूसरा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नॉर्मल है, इससे खास नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसका लेस प्रायोरिटी है, थर्ड वैसे करके, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पर मैं बताऊँ तो पहले जो फर्स्ट काम है, जो प्रायोरिटी नंबर 1 किया हुआ, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्स का या मैन पावर का इस्तेमाल करेंगे, आप ले जाएंगे यहाँ से 1 में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश, क्योंकि ये दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, so that's why we have to concentrate, we have to focus on that particular project। तो as per priorities हम अपने human capital का यूज करेंगे, utilization of manpower करेंगे, right। so these are the 5 importance of personal management। number 1 is staying competitive your employees with the help of training, upgradation, seminars, workshop, then we can see the changes or we can see the development of the skill and knowledge in the employees, and that is very necessary। number 2 is retention, this is the second importance of personal management, to retain your employees with the help of through good pay plan, benefits packages, facilities like child education, PF facilities, snacks, what are the fringe benefits you can offer them to retain good employees। Number 3 is teamwork. Importance. Number 3 importance is teamwork. It facilitates, personal management facilitates or helps in teamwork that tries to make bond between the employees and the company. It is very important role of personal management that it acts as a link between the company and the employees। Number 4 is managerial effectiveness. This is number 4 importance of personal management is managerial effectiveness, because every actions affect the productivity. It is very important. Manager should act because the company needs the manager to take the work from other employees, the team members. So that's why it is very important how a manager handles the situation. Number 5th is human capital management. It is the 5th importance of personal management, because with the help of personal management, we can manage the human capital in a proper way or as per the priorities and as per the skills and knowledge of the employees, and we can utilize as per their skills and knowledge. So that's why these are the very important points you have to note down, or you can take a screenshot, but I will share you in the group. Okay, so I think